Good morning, students. Welcome to today's class. In today's class, we are going to discuss some topics which are as follows. First, working of DBMS. Second, classification of SQL statements. Third, MySQL elements. And fourth, MySQL data types. Now, let's see it one by one. Now, student, first of all, we are going to talk about working of DBMS, that is Database Management System. So here you can see the database. Student, database is a collection of large amount of data. You can see it is given raw data, figure, statistics, values and facts. And in previous class, student, we have talked about, that is, in this chapter we will talk about the relational database management system. So below image you can see the database consists of tables like products table, customers table, order is another table. Okay. So next image, database needs database management system. So, the working of DBMS is to store data, to retrieve data, and administration work, reports, queries, and data security. Now, in a corresponding below image, you can see our database is MySQL. MySQL will do all this work: data storage, data retrieval, administration, reports, queries, and data security. The next thing is application software. Student, we have studied in Unit 1 that user always interact with application. So, we are user and we are always using a software. Software can be written in any programming language. We call that data website code. Programming language can be PHP, Ruby, Perl, Python, etc. So we are the user and we are interacting with these softwares. And then software called DBMS, and DBMS will access this database. Okay. So MySQL is a DBMS and uses a language called SQL, Structure Query Language. So this is called the working of DBMS. After that, next is classification of SQL statements. So this SQL statement classify into four category. First, DDL, data definition language. Second, data manipulation language, in short we call it DML. Third, transaction control language, TCL. Data control language, DCL. Now student, what is SQL statements? So with the help of SQL commands we can create a database. ओके स्टूडेंट, एसक्यूएल स्टेटमेंट का यूज़ हम डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए करते हैं जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स की कमांड का यूज़ करते हैं. इन क्लास 11 we will cover only these two classification, that is DDL and DML. If somebody asks you this question, how many categories of SQL commands, then you have to tell four classes with their names. In class 11, we will talk about only two categories or classification, DDL and DML. DDL, data definition language, it include basically three commands. First create, second alter, third drop. So create command, I have classified it into two parts because we have to create database and then in that database we have to create table. So I have written it two times but you consider it one. In that we can write create database
oblique table also. Second is alter. Student, alter means change karna, means if you want to change the structure of a database, then alter command is used. Student, first of all we have to create container. I have told you earlier database is just like a container, and then in that container अगर आप कुछ modification changes करना चाहते हो, then we will use alter command. And if we want to remove that particular database structure, then we will use drop command. Means student, if you want to remove the structure, only the structure of a table from the computer memory, then आप drop command का use करेंगे. Next is DML, data manipulation language. This is categorized into four parts. First, select query, that means extracting information from the table. Next is insert, inserting values in a table. Next, delete, means if you want to remove the items or information from the table, then delete command is used. Last is update. If you want to change existing value of a table, then update command is used. So this is the classification of SQL statement. This is important for the exam point of view. Okay. Now student, the basic difference between drop and delete command is if you want to remove the structure of a table, then drop command is used, and if you want to remove the information or item from the table, then we will use delete command. Name of topic, MySQL elements. MySQL consists of four elements. First, literals, second, data types, third, nulls, and fourth, comment. So consider this table for understanding the elements of table. So first is literal. Literal means in this table you can see we are having four columns: roll number, name, gender, and last marks. And these columns are having some values like roll number 1, 2, 3, name Siddharth, Gurpreet, and Monica. Student, it refers to a fixed data value. This fixed data value may be of character or numeric type. So these values are known as literals. For example, replay, Raj, 8, 306 are all character literals. Student, replay and Raj is a group of character, means we call it string. बट अगर हम यहाँ बात करें तो 8 एंड 306 नंबर्स हैं, बट हमने इसे सिंगल कोड में लिखा है, इसलिए अब हम इसे नंबर ट्रीट ना करते हुए एज अ कैरेक्टर ट्रीट करेंगे. Numbers not enclosed in quotation marks are numeric literals. स्टूडेंट, नंबर्स को कभी भी कोटेशन मार्क्स में नहीं लिखा जाता है, इसीलिए वो न्यूमेरिक लिटरल्स कहलाते हैं. For example, 22, 18, 1997 are all numeric literals. Student, numeric literals can either be integer literals. Integer means without any decimal, or be real literals, that is with a decimal point. For example, 17 is an integer literal, but 17.0 and 17.5 are real literals. Okay student, after that, data type. For understanding data types, consider this table student. Here I have given two tables. One table is having all the column name and all the entries for the row also. But in the second table we are having only column name and other entries are empty. So the logic of displaying these two tables is that in first table we are having structure as well as the elements, and in the second table we are having only the structure without element. Means student, अगर आपको first table create करनी हो
मीन्स आपको जिसमें एलिमेंट्स भी इंक्लूड करना हो तब आप डीएमएल स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। एंड अगर आपको विदाउट एलिमेंट मीन्स ओनली स्ट्रक्चर क्रिएट करना हो तब आप डीडीएल स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। After that, so let's talk about data type. Consider this table to understanding data type. How here we are having four columns: roll number, name, gender and marks. Now just observe the value of these columns. So from this table we observe the following values. Roll number contain number from 1 to 3. Name contain alphabets. Gender contains single alphabet either M or F, means male or female. Marks 1 contain numbers in decimal form. So on the basis of this table, data type are divided into three categories: numeric, date and time, string types. बट स्टूडेंट हम इसे डिस्कस करें उससे पहले देख लेते हैं डेटा टाइप का मीनिंग क्या होता है। डेटा टाइप्स आर मीन्स टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा and associated operations for handling it, means data type किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन और डेटा के टाइप को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके साथ होने वाले ऑपरेशन को भी बताते हैं। फर्स्ट, न्यूमेरिक डेटा टाइप। Student, MySQL uses all the standard ANSI SQL numeric data type. First, INT, used for number without decimal. Second, decimal in a bracket m comma d. It is a parameter used for floating or real numbers. M denote the total length of number and d is number of decimal digit. मीन्स स्टूडेंट अगर हमें बिना डेसिमल के वैल्यू किसी डेटाबेस में इंसर्ट करनी हो तब हम उस कॉलम का डेटा टाइप आईएनटी लेंगे। अगर हमें किसी कॉलम में डेसिमल वैल्यू से इंफॉर्मेशन डालनी हो तब हम उसका डेटा टाइप क्या लेंगे, डेसिमल, और उसमें दो पैरामीटर पास करेंगे एम कॉमा डी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 16,4 लिखते हैं तो 4 क्या होगा, नंबर ऑफ डेसिमल्स होंगे जो 16 डिजिट के बाद में आएंगे। After that, second, date and time. The MySQL date and time data types are: first, date, used to store date in YYYY, means year, MM and DD के फॉर्मेट में होगा ऑलवेज। मीन्स अगर वैल्यू हम देखें फॉर एग्जांपल अगर हमें लिखना हो December 30, 1973 would be stored as 1973-12-30, मीन्स जो फर्स्ट है वो ईयर को इंडिकेट करेगा, मिडिल पार्ट मंथ को इंडिकेट करेगा एंड लास्ट पार्ट डे को इंडिकेट करेगा। आफ्टर दैट टाइम, स्टोर द टाइम इन HH, MM, SS फॉर्मेट। और मिनट एंड सेकेंड के फॉर्मेट में टाइम ऑलवेज डिस्प्ले होगा। ओके स्टूडेंट, वेलकम टू थर्ड पार्ट ऑफ टुडेज क्लास। नेक्स्ट डेटा टाइप इज स्ट्रिंग। Student, most data that you used in database is in string format. The common string data type are: first, character in a bracket m, used to store a fixed length string. M denote maximum number of character. Second, varchar in a bracket small m, used to store a variable length string. M denotes maximum number of character. Student, varchar is a combination of variable and character. Don't pronounce it varchar. Okay student. Now अगर कैरेक्टर की लेंथ फिक्स्ड होती है मीन्स बिटवीन 1 to 255 कैरेक्टर तब हम कैरेक्टर का यूज करते हैं मीन्स CHAR का। और अगर वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग होती है बिटवीन 1 to 255 कैरेक्टर लेंथ की तब हम VAR CHAR का यूज करते हैं। Here the difference between CHAR and
VAR स्टूडेंट हमने डेटा टाइप के क्लासिफिकेशन देखे। न्यूमेरिक, आईएनटी और डेसिमल, स्ट्रिंग, CHAR, VAR, CHAR। थर्ड, डेट टाइम मीन्स इसमें दो डेटा टाइप होंगे, अनदर डेट एंड टाइम। आफ्टर दैट थर्ड element, null values. If a column in a row has no value, then column is said to be null or to contain a null. You should use a null value when the actual value is not known or when a value would not be meaningful. मीन्स स्टूडेंट, अगर किसी कॉलम में पर्टिकुलर रो पर कोई भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं होती है तब उस कॉलम को नल कहा जाता है। आफ्टर दैट लास्ट इज कमेंट। अ कमेंट इज अ टेक्स्ट दैट इज नॉट एग्जीक्यूटेड, इट इज ओनली फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस। स्टूडेंट, कमेंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के पर्पस से ही यूज किए जाते हैं। A comment generally describes the statement purpose within an application. A comment can appear between any keywords, parameter or punctuation marks in a statement. Comment किसके बीच में यूज होता है? कीवर्ड्स के, पैरामीटर के या फिर कोई लाइन ऑफ कोड जो हमें डिस्क्राइब करनी हो तब हम कमेंट का यूज करते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कमेंट। फर्स्ट, मल्टी लाइन कमेंट्स मीन्स अगर हमें एक से ज़्यादा लाइन को कमेंट बनाना हो तब हम मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ करते हैं, जिसकी स्टार्टिंग स्लैश स्टार से होती है एंड एंडिंग विथ स्टार स्लैश। आफ्टर दैट हैश मीन्स अगर हमें सिंगल लाइन को कमेंट ट्रीट करना हो तो हम उसके पहले क्या यूज़ करते हैं? हैश सिंबल। लास्ट वन इज डैश डैश मीन्स अगर हमें क्या करना हो, proceed with the text of comment, this cannot extend to a new line. End the comment with a line break followed by a space. Okay student, तो ये आपने क्या देखा? Comment, the elements and the data type of DBM.